Classification of collision. In classification of collision, there are two types of classification. First, based on line of impact. First, head-on collision. In this type of collision, the line of motion and line of impacts are same. Line of motion and line of impact are same. जैसे हमने पहले एग्जाम्पल बताया, there are two balls M1 and M2, velocity of ball M1 is U1 and M2 is U2. दोनों कोलाइड करेंगी, V1 M2. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि लाइन ऑफ कोलिजन भी, लाइन ऑफ इम्पैक्ट भी यही है और लाइन ऑफ मोशन भी यही है. तो इस टाइप की कोलिजन को कहते हैं हेड ऑन कोलिजन. नाउ बी, oblique collision. What in oblique collision? Line of impact and line of motion are not in same direction. If line of impact and line of motion are not in same direction, then this type of collision is called the oblique collision. Like for example, जैसा मैंने पहले बताया था आप लोगों को, किसी वेज पर, इसके लिए एग्जाम्पल मैं यहाँ बताता हूँ आप लोगों को. जैसे वेज, a ball is struck on the wedge and rebound like this. नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन यह है, चेंज इन मोमेंटम इसी डायरेक्शन में होगा. तो दिस इज द लाइन ऑफ इम्पैक्ट और यह हो जाएगा आपका लाइन ऑफ मोशन. यहां आप देख सकते हैं आसानी से लाइन ऑफ मोशन अलग है और लाइन ऑफ इम्पैक्ट अलग है. दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड द oblique collision. Based on energy conservation. First, elastic collision.
In elastic collision, after collision, balls regain their shape and size. Balls regain their after collision balls regain their shape and size. B. After collision, no loss of energy means mechanical energy is conserved. Coefficient of restitution is 1. It means no loss of kinetic energy. B. F net बराबर 0, so that F net equal to 0, the momentum is conserved. Momentum of is conserved. Momentum of system is conserved. तो जब भी इलास्टिक कोलिजन होगा तो आप उसे मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, और E इक्वल टू 1 की इक्वेशन भी आप लगा सकते हैं। इलास्टिक कोलिजन के लिए E इक्वल टू 1 होगा, नो लॉस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी और मोमेंटम ऑफ द सिस्टम भी कंजर्व्ड रहेगा। कोलिजन के पहले का मोमेंटम और कोलिजन के बाद का मोमेंटम दोनों बराबर होंगे। Second type of collision, that is in elastic collision. In this type of collision, after collision, object not regain their shape and size as it was before the collision. B. Mechanical energy is not conserved. C. E greater than 0 or less than 1 for this type of collision. D. H. F net is equal to 0, so momentum of system is conserved. In this type of, while there is energy loss but the momentum is conserved because the F net on the system is 0. तो इस तरह की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें एक तो लगाना पड़ेगा E इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन V1 माइनस V2 एंड मोमेंटम कंजर्वेशन। हम यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते, यहाँ पर एनर्जी का लॉस हो जाता है।
type of collision is perfectly elastic collision. Perfectly inelastic collision. इसमें आप देखें A is equal to 0. B. After collision, both blocks will move together. After collision, velocity of both objects is same as A is equal to 0 is equal to V2 minus V1 upon U1 minus U2 implies V1 is equal to V2. C. The kinetic energy is not conserved. Before collision kinetic energy different and after collision kinetic energy is different. इस तरह से आप डी पॉइंट में और देखिए एफ नेट इज इक्वल टू 0, मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड. इस तरह की प्रॉब्लम करते वक्त हमें ध्यान रखेंगे इज इक्वल टू 0 होगा और आफ्टर कोलिजन दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम हो जाएगी और इसमें हम लोग एफ नेट बराबर 0 है तो मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लगा सकते हैं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो कंजर्व्ड नहीं कर सकते, जो पहले थी वो बाद में नहीं होगी, डिफरेंट होगी. अब हेड ऑन कोलिजन के लिए कुछ एग्जाम्पल लेकर देखते हैं हम लोग. The velocity of a particle after collision. Object after collision. There are two balls, M1. Initial velocity is U1. There another ball M2 and initial velocity is U2. They will strike. Coefficient of restitution is E. ये इस पे नॉर्मल लगा देगा, ये इस पे नॉर्मल लगा देगा. After collision, velocity of M1 is V1, M2 is V2. So find out the V1 and V2 in terms of U1, U2, M1, M2 and E. So by applying energy conservation, we cannot conserve the energy because the coefficient of restitution is E. It is not 0, it is not 1. We can apply here momentum conservation. Yes, we can apply the momentum conservation because the F net on the system is 0. So applying the momentum conservation, initial momentum is M1 U1 plus M2 U2 is equal to final momentum, that is M1 V1 plus M2 V2. What is the coefficient of restitution? That is E. That is the V2 minus V1 upon U1 minus U2. This is the equation number first. This is the equation number second.
By solving these equations, you can find out the velocity of V1, V2 in terms of M1, M2, U1, U2 and E. Multiply EU1 minus EU2 is equal to V2 minus V1. Now what is V2? From here V2 is V1 plus E common ले लो U1 minus U2. Keep this value of V2 in equation number first. By keeping V2 in equation first, M1 U1 plus M2 U2 is equal to M1 U1 plus V2 की वैल्यू रखने पर M2 V1 plus M1 E U1 minus U2. Then V1 is M1 U1 plus M2 U2 minus M1 E U1 minus U2 upon M1 प्लस M2. इस प्रकार आप V1 निकाल सकते हैं और लाइक दैट आप V2 भी निकाल सकते हैं ओनली बाय सॉल्विंग दीज इक्वेशंस. Take the examples for head-on collision. If a ball of 2 kg is moving with 10 meter per second, another ball of 1 kg is at rest. After collision, if E is equal to 1 by 2 and after collision find out velocity of 2 kg and 1 kg. आप यहाँ देख सकते हैं E is equal to 1 by 2 दिया हुआ है, so we cannot conserve the energy conservation equation. But F net 0 so that we can conserve the momentum conservation. Okay. तो फर्स्ट इक्वेशन लगाइए मोमेंटम कंजर्वेशन की, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. इनिशियल मोमेंटम इज 20 plus 0 that is 2v1 plus v2. Now E के लिए इक्वेशन लिखिए E is equal to v2 minus v1 upon u1 minus u2. So 1 by 2 v2 minus v1 upon u1 is 10 minus 0. Equation number 2. By solving these two equations, you can find out the velocity after collision, that is v1 and v2. 2 to 5 times v2 minus v1 is 5. Third, we know that twice v1 plus v2 is equal to 20 and minus v1 plus v2 is equal to 5. Subtract कर दें, प्लस माइनस माइनस, then
3v1 is equal to 15 implies v1 equal to 5 meter per second. For that v2 is 10 meter per second. इस प्रकार आप देख सकते हैं कि v1 5 मीटर पर सेकंड एंड v2 10 मीटर पर सेकंड. यदि आपको इस क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी में लॉस निकालना हो तो सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को लें और सिस्टम की बाद वाली काइनेटिक एनर्जी को लें, उन दोनों को माइनस कर दें तो यू कैन फाइंड आउट द लॉस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी. लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी फाइनल इनिशियल minus kinetic energy final, that is initially 1 by 2 into 10 whole square plus 0. Final is 1 by 2 into 5 whole square plus 1 by 2 1 into 10 whole square. Now calculate and find out the loss in the kinetic energy. इस तरह से आप कोलिजन के हेड एंड कोलिजन के क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं. सभी इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं जहां पर आपको कभी इसकी वैल्यू दे दी जाएगी, इसकी नहीं दी जाएगी, इसकी दे दी जाएगी और दोनों की दे दी जाएगी, तब आपको v1 v2 निकालने होंगे. कभी आपको इसकी नहीं दी जाएगी, v1 v2 दे दिया जाएगा, तब आपको इनकी इनिशियल वैल्यूज पूछ रहे होंगे आपसे. और कभी कभार रेस्टिट्यूशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पूछा जा सकता है इसके अंदर. जब आपको u1 u2 दिया जाएगा, v1 v2 दिया जाएगा, तब आप E की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं. Next example, if there are two balls of same mass, velocity of first ball is u, second is 0 after collision. M भी कर देते हैं. Velocity of MA is V1, MB is V2. If E is equal to 1, it means there is no loss of the kinetic energy. Then you can see MAU is equal to MA V1 plus MB V2. At E is equal to 1, so that V2 minus V1 upon U minus 0. Now, there is a condition. If MA is equal to MB, M और M कट जाएगा, तो you find V1 plus V2 is equal to U. और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी आपकी V2 minus V1 equal to U. By adding these two equations, V1 से V1 कट जाएगा, V2 2V2 is equal to 2U1 and V2 is equal to U. By adding one plus 2, V2 is equal to U and V1 equal to 0. बहुत ही अच्छे डेटा है. इट मीन्स ये वाली बॉल तो रुक जाएगी और ये वाली बॉल U से आगे चली जाएगी. यहां पर देखें V1 is equal to 0 and V2 is equal to U.
आप देख सकते हैं कि यदि दो सेम मास की बॉल जिधर फर्स्ट रुकी हुई हो सेकंड यू से चल रही हो और E इक्वल टू 1 हो, तो आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं कि फर्स्ट बॉल रुक जाएगी और सेकंड बॉल चली जाएगी, मतलब दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे से ट्रांसफर हो जाएगी, दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे से ट्रांसफर हो जाएगी। Now next example, value of velocities after collision. Value of velocities after collision. मान लो there are two balls. First is m1, initial velocity is u1. Second is m2, initial velocity is u2. After collision, velocity of m1 is v1 and velocity of m2 is v2. E is the coefficient of restitution before striking. Velocity of m1 is u1, m2 u2, and after striking velocity of m1 is v1 and velocity of m2 is v2. We have to find out the velocity of v1 and v2. Now from conservation of momentum, in conservation of momentum you can write m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. पहले का मोमेंटम और बाद वाला मोमेंटम बराबर होगा। फ्रॉम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यू कैन राइट E is equal to v2 minus v1 upon u1 minus u2. From equation number 1 and 2, you can get the value of v1 and v2. इक्वेशन नंबर 2 को रीअरेंज करें थोड़ा सा, तो आप लिख सकते हैं v2 माइनस v1 इक्वल टू E u1 माइनस u2, और आप और अरेंज करें तो लिख सकते हैं v2 इक्वल टू v1 प्लस E u1 माइनस u2. इक्वेशन नंबर 3. By keeping the value of v2 from equation number 3, in equation number 1 you can find out the v1. That is v1 is equal to m1 u1 plus m2 u2 plus m2 E u2 minus u1 upon m1 plus m2. Like that you can find out v2 m1 u1 plus m2 u2 plus m1 E u1 minus u2 upon m1 plus m2. इस तरह से यदि आपको u1, u2 और E की वैल्यू पता है तो आप आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ v1 एंड v2 आसानी से इन फॉर्मूलोज को यूज करते हुए निकाल सकते हैं। कुछ स्पेशल केस देखते हैं।
Some special case. Some special case like M1 is greater than M2, E is equal to 1, or U1 is U and U2 is 0. कैसे हैं कि M1 बॉल कितनी बड़ी है, ज्यादा बड़ी है, और M2 बॉल उससे थोड़ी छोटी है. इसकी वेलोसिटी U है और इसकी इनिशियल 0 है. आफ्टर स्ट्राइकिंग M1 V1 हो जाती है और M2 V2 हो जाती है. तो we have to find out the value of V1 and V2 by using this formula. Now V1 की तरफ देखिए आप. If U2 is 0, then what is V1? U2 0 यहाँ लिखूंगा मैं और U2 0 मैं यहाँ पर लिखूंगा और E is equal to 1 लिखूंगा. तो I can get the V1. V1 is M1 U1 minus M2 U1 upon M1 plus M2. Rearranging this, and we know that M1 is greater than M2, then you can find out V1 is almost equal to U. Like this. What is V2? V2 में देखिए U2 0 करें और E को 1 रखें तो you can get M1 U1 plus M1 U1 upon M1 plus M2. Then twice M1 U1 upon M1 plus M2. Now M1 is greater, बहुत बड़ा है M1, तो you can write V2 is almost equal to 2U. इस प्रकार आप देख सकते हैं कि V1 is U and V2 is 2U. तो छोटा ब्लॉक है वो डबल वेलोसिटी दौड़ेगा और जो बड़ा है वह उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा. मतलब V1 तो चेंज होगा ही नहीं, U ही रहेगा और M2 की वेलोसिटी हो जाएगी 2U. M2 की वेलोसिटी हो जाएगी 2U. इसमें एक और स्पेशल केस देखते हैं. एक और स्पेशल केस देखते हैं. उसमें देखते हैं हम लोग कि इफ M1 is equal to M2 and E is equal to 1, velocity of M1 initial velocity is U1 and M2 is U2, means is equal to M. This is M1, velocity U1, this is M2, velocity U2. After striking M1 की वेलोसिटी V1 हो जाती है और M2 की V2. तो मुझे V1 और V2 फाइंड आउट करना है, जबकि M1 M2 बराबर स्मॉल m है और E इज इक्वल टू 1 है. तो मैं नाउ आई कीप द वैल्यू ऑफ दीज. यहां पर वैल्यू रखने पर M1 और M1 आप देख सकते हैं कि V1 इज इक्वल टू M कॉमन ले लेंगे, नीचे 2 बच जाएगा तो U1 प्लस U2 प्लस E की वैल्यू 1 लिखें तो U2 माइनस U1 अपॉन 2. इससे ये कट जाएगा. देन यू कैन सी
u1 इक्वल टू u2। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि V2 में क्या होगा। V2 में होगा u1 प्लस u2 प्लस u1 माइनस u2 अपॉन 2। यहां पर u2 से u2 कैंसिल हो जाएगा, देन V2 इज u1। तो नाउ यू कैन सी इजीली कि वेलोसिटी ऑफ v1 इज, इसकी हो गई आपकी u1 और इसकी हो गई आपकी u1। मीन्स वेलोसिटी जो m1 की थी वह अब m2 की हो गई आफ्टर कोलिजन, और जो m2 की थी वह हो गई m1 की। मतलब वेलोसिटी का ट्रांसफर हो गया आफ्टर कोलिजन। यह कब होगा, जब m1 बराबर m2 बराबर स्मॉल m, मतलब दोनों बॉल के मास बराबर होंगे और कोलिजन पूरी तरह से इलास्टिक हो, E इक्वल टू 1 हो, तो ऐसी कंडीशन हमारे सामने आ जाएगी। Now, oblique collision. Oblique collision. An oblique collision it is somewhat different from head-on collision. हेड ऑन कोलिजन में बॉल आमने सामने टकराती है, मीन्स लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ कोलिजन दोनों सेम होता है। यहाँ पर लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट दोनों अलग अलग होगी। कैसे? इफ ए बॉल हैविंग वेलोसिटी v1 another ball having velocity v2, इसकी लाइन ऑफ मोशन ये है और इसकी लाइन ऑफ मोशन ये है। जब इन दोनों के बीच में कोलिजन होगा इस तरह की स्थिति बनेगी। तो इसकी लाइन ऑफ कोलिजन तो ये है और इसकी ये इंटरसेक्शन की u1 u2 माने u1 एंड u2 एंड u1। जब कोलिजन हुआ तो आप देख सकते हैं कि यहां पर कांटेक्ट यहां हुआ, तो नॉर्मल फोर्स कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। तो दिस इज द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अब ऐसी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए हम देखेंगे कि लेट दिस एंगल इज थीटा, तो दिस एंगल इज आल्सो थीटा। नाउ u1 के दो कंपोनेंट करें तो यू कैन फाइंड आउट, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा और एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, दैट इज u1 sin थीटा और दिस इज u2 sin थीटा, u1 sin थीटा, u1 cos थीटा। नाउ u2 का कंपोनेंट करें तो यू कैन सी एक इधर होगा और एक इधर होगा, ये होगा u2 sin थीटा और u2 cos थीटा। तो आप देख सकते हैं कि u1 sin थीटा और u2 sin थीटा विल नॉट बी चेंज, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है।
लेकिन u1 cos थीटा और u2 cos थीटा ये आपस में चेंज होंगे, मतलब आफ्टर कोलिजन। लेट u1 cos हो जाता है v1 और v2 cos हो जाता है, लेट कहीं पे ही मान सकते हैं इसे हम लोग v2, u2 cos हो जाता है v2। तो ये v1 v2 चेंज हो गए, लेकिन यू कैन सी u1 sin theta will not be changed and u2 sin theta will not be changed। तो हमारे लिए एक तरह से यह हेड ऑन कोलिजन ही हो जाता है जब हम इनकी वेलोसिटी u1 cos थीटा और u2 cos थीटा ले लें। तो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग क्या मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लिख सकता हूं? हाँ, लिख सकता हूं। दैट इज आई कैन राइट m1 u1 cos थीटा 1 थीटा प्लस m2 u2 cos थीटा 2, लेकिन ये डायरेक्शन माइनस में है तो माइनस u2 cos थीटा 2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इसी प्रकार इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन है, लेट E इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। देन इक्वेशन लिखिए E के लिए, E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 cos थीटा माइनस अंदर माइनस आएगा u2 cos थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 and 2 you can find out the velocity of v1 and v2। जब आपको v1 v2 मिल जाएगा तो u1 sin थीटा और v1 से एक नेट वेलोसिटी निकाल लेंगे आप, v नेट, लाइक दैट v2 और u sin थीटा आप निकाल लेंगे एक नेट वेलोसिटी। इस तरह से आप ऑब्लिक कोलिजन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं एक बार फिर देखते हमने क्या किया। दो बॉल जिनके मास m1 m2 है आपस में एक दूसरे के अपोजिट मोशन में है। यहां पर देखिए इन दोनों की लाइन ऑफ मोशन अलग अलग है। जब दोनों आपस में टकराएंगी तो लाइन ऑफ इंपैक्ट नॉर्मल के एलोंग हो जाएगी। अब हमने क्या किया, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ m1 दैट इज u1, उसके दो कंपोनेंट किए u1 cos थीटा u1 sin थीटा, लाइक दिस u2 के दो कंपोनेंट किए u2 cos थीटा और u2 sin थीटा। अब हम अच्छी तरह समझ रहे हैं कि u1 sin थीटा और u2 sin थीटा विल नॉट बी चेंज, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स है ही नहीं। लेकिन u1 cos थीटा और u2 cos थीटा तो बदलेंगे ही बदलेंगे, क्योंकि उस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स दोनों बॉल्स पर लग रहा है। तो हमने देखा कि जब दोनों कोलिजन u1 cos थीटा और u2 sin थीटा दोनों आपस में टकरा रहे हैं तो नॉर्मल फोर्स m1 पे लग रहा है और m2 पे लग रहा है, तो u1 cos थीटा भी चेंज होगा और u2 cos थीटा भी चेंज होगा। इस प्रॉब्लम को हम सोल्व कर सकते हैं हेड ऑन कोलिजन से। हम क्या करेंगे कि मान लिया लेट आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m in the direction of line of impact that is v1 or like that velocity of m2 in the direction of line of impact that is v2 मान लिया हम लोगों ने, और u1 sin थीटा और u2 sin थीटा will not be change। फिर हमने क्या किया कि मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया। कैसे? किस डायरेक्शन में? मोमेंटम कंजर्वेशन इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स दैट इज द लाइन ऑफ इंपैक्ट। m1 u1 cos थीटा प्लस m2 माइनस u2 cos थीटा डायरेक्शन अपोजिट है इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ इंपैक्ट।
और E को भी हम लिखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट V2 minus V1 upon U1 cos theta minus U2 cos theta. By solving these equation, we can find out the V1 and V2. V1 and V2. और जब V1 और V2 मिल जाएगा हमें तो M1 की नेट वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं बाय द वेक्टर सम ऑफ V1 एंड U1 sin थीटा दैट इज V नेट। और इसी प्रकार से M2 की नेट वेलोसिटी निकाल सकते हैं हम लोग बाय द वेक्टर सम ऑफ V2 एंड U2 sin थीटा दैट इज V2। इस तरह से आपका ऑब्लिक कोलिजन की कोई भी प्रॉब्लम आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं।